Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Munir High School e-learning system, class 4. This is your science lecture. Today we are going to read and explain unit number 12. Topic is light. This is a title page of your amazing science book for class 4. Unit number is 12. It is about the light. Students, this picture shows that the sun gives us heat and light to the earth. Now the question arises that what is light? Can you imagine what the world would be like without light? कि अगर हमारे एक लाइट मौजूद ना होती, रोशनी मौजूद ना होती, तो ये दुनिया किस तरह की होती? देयर वुड बी नो कलर्स, कोई रंग ना होते, नो प्लांट्स, कोई दरख्त पौधे मौजूद ना होते, एंड नो एनिमल्स ऑन द अर्थ, और कोई एनिमल्स भी ज़मीन पे मौजूद ना होते. द सन गिव्स हीट एंड लाइट टू द अर्थ. हमारे प्लेनेट अर्थ को हीट और लाइट कौन प्रोवाइड करता है? इट इज़ द सन. सो सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. We can see objects because they scatter light in our eyes. हम different objects को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि the light of the sun scatter light in our eyes. So a burning candle. So here students, we have the picture of this candle, and a glowing bulb gives out light. So light, what is light? Light is a form of energy students. Light helps to do things. Light हमारी help करती है ताकि हम मुख्तलिफ काम कर सकें. The light from the sun helps plants to make food. और लाइट हम सन से हासिल करते हैं, वो प्लांट्स की हेल्प करती है ताकि प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर कर सकें. A solar calculator works by sunlight. So here students, we have the picture of a solar calculator which works on the light of a sunlight. Next students, we have light travels very fast. Light travels about 300,000 kilometers in 1 second. So this is very interesting fact. It travels faster than sound. जो लाइट है, रोशनी है, वो साउंड की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है. वी नो दिस, हम इस तरह से इसको जानते हैं बिकॉज ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, क्योंकि जब भी तूफान आता है, वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बिफोर वी हेयर द क्लैप ऑफ थंडर. तो हमें पहले फ्लैश ऑफ लाइटनिंग दिखाई देती है और बाद में उसकी साउंड हमें सुनाई देती है. सो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड. लाइट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस. इफ लाइट कुड नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस, अगर स्पेस में से लाइट पास नहीं होती, वी वुड नॉट बी एबल टू सी द लाइट फ्रॉम द सन एंड द स्टार्स. तो हम जो है सूरज की रोशनी हमारी ज़मीन तक ना पहुंच पाती और हम उस लाइट की मदद से ना देख पाते. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स. लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल स्टूडेंट्स इन स्ट्रेट लाइन. If you look at a candle flame through a drinking straw, you can see the flame. If you bend the straw, you will not be able to see the flame. Light can only travel in straight lines. So this means that light travels in straight lines. The straight path of light is called a ray. जो स्ट्रेट रास्ता है, स्ट्रेट पाथ है लाइट का, हम उसको रे कहते हैं. अ रे शोज द पाथ ऑफ द लाइट. और रे पाथ को शो करता है लाइट के. मैनी रेज ऑफ लाइट मेक अप अ बीम ऑफ लाइट. ज़्यादा रेज ऑफ लाइट मिलकर बीम ऑफ लाइट बनाती हैं. अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट ऑफ वन कलर इज कॉल्ड अ लेज़र बीम. अ लेज़र बीम gives out heat. It is used by doctors to seal broken blood vessels and skin. What is the reflection of light students?
when a ray of light falls on a smooth surface such as a flat mirror, जब भी किसी light ray fall करती है किसी smooth surface पे, as shown in this picture, जैसे कि flat mirror है, it bounces back, वो दोबारा से bounce back होती है in the opposite direction, मुख्तलिफ direction में, उलट डायरेक्शन में. This bouncing of light is called the reflection of light. So when light rays fall on a rough surface, so students, here in this picture we have rough surface like wooden table, they scattered in all directions, and when a ray of light strikes a flat shiny surface as shown in this figure, it is reflected at the same angle but in opposite direction. Students, we can see the reflection of an object in a mirror. हम शीशे में मिरर में भी reflection of an object देख सकते हैं. The reflection of an object is called an image, and this reflection is called the image. So image of the object appears to be as far behind the mirror as the object is in front of the mirror. So the image is the same size as the object. The image is literally inverted. This means that the left side of the object becomes the right and right side becomes the left. How do we see things? हमें चीज़ें कैसे नज़र आती हैं? Some objects such as sun, electric lamps, bulbs, fires and candles give off light. हमें क्या देते हैं? ये सब चीज़ें हमें लाइट देती हैं. They are called luminous bodies. इसलिए हम इनको luminous bodies कहते हैं. So here students, we have this picture of sun, moon and earth. But most things that we see do not give off light of their own. लेकिन अक्सर ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं लेकिन उनकी अपनी कोई लाइट नहीं है. Light from the sun, a lamp or some other luminous body shines on them. It is only then that we can see them. They reflect the light that falls on them into our eyes. So the reflected light tells us the shapes, sizes and colors of the objects. Bodies which do not give off their own light are called non-luminous bodies. ऐसी bodies जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं है उनको हम non-luminous bodies कहते हैं. The moon does not give off light. चांद मून हमें लाइट नहीं देता. इट इज़ ए नॉन लुमिनस बॉडी. तो इसलिए ये नॉन लुमिनस बॉडी है. इट ओनली रिफ्लेक्ट सनलाइट. ये हमें ग्लोइंग क्यों नज़र आता है नाइट टाइम में? क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है व्हेन द सन शाइन्स ऑन इट. What we see as moonlight is really the light of the sun reflected by the moon. Next students, we have the solved exercise of lesson number 12. Light. First of all, question number 1. Answer the following questions. Part A, correct answer is we can see objects when they reflect the light that falls on them. Part B, there will be no colors, plants or animals on earth. Part C, the speed of light is 300,000 kilometers in 1 second. Part D, we know that light can travel through space because we are able to see the light from the sun and the stars. Part E, the straight path of light is called a ray. Part 2, many rays make a beam of light. Part F, a very narrow beam of light of one color is called a laser beam. Part G, the bouncing back of light from a smooth surface is called reflection of light. Part H, the reflection of an object in a mirror is called an image. Next question number 2, fill in the blanks. Number A, correct answer is sound. Part B, laser. Part C, scattered. Part D, image. Question number 3, draw diagrams to show reflection of light. It is given in our book, unit number 12. This picture shows the light reflecting off a smooth surface and this picture shows the light reflecting off a rough surface. The last students, we have the worksheet. Look at the light sources below. If it is a natural light source, write N, and if it is an artificial source, write A. So N, this is the natural source. A, yes, this is TV, it is artificial source. It is also artificial. It is
also artificial source, yes, natural source, artificial source, and this is also a picture of a sun which is natural source. So this is all for today. Thank you. Allah Hafiz.